Hey guys, welcome back to Unfiltered Podcast. Today, for the first time ever, we will be shooting a horror yet mysterious podcast on our channel. I'm super excited, but I'm super scared at the same time because we have the guy who has dominated the horror storytelling industry by posting reels which pop up on your feed at 2 a.m. in the night and you obviously get scared. None other than Devesh. If you don't know who Devesh is, that Devesh is a content creator who posts reels and tells your story of various things like serial killers in India, haunted places in India, horror stories, mysterious stories, and whatnot. So today we are going to discuss it out with him. And obviously be ready because get ready to dive into the world of horror with him. Okay, hi. Hello. How are you? I'm all good. What's up? Nothing. I am actually very excited and scared at the same time. I don't know why people keep seeing my face and they're like I'm scared. यार मैं सिर्फ वो content वैसा बनाता हूँ. Real में मैं scary नहीं हूँ. हाँ, I agree. Real में scary नहीं है, but when I saw your content and everything, when I was researching and all, I was scared. I was genuinely very sad. So before we begin, I have to ask you this. Why does your reel pop up on my feed at 2 a.m. in the night? Why? Every single time I'm just scrolling reels, I'm like, I'm ready to sleep, and then your reel pops up and I'm like, oh my god. And I have to see that because it's so interesting. Of course, but it totally depends on the Instagram algorithm. Yeah. Algorithm reaches you at the night if it's a horror video. And you know, we keep saying, nah, just one last reel before I Yeah. and that one last reel is like the horror one. That doesn't let you sleep. That's cool. But yeah, totally based on algorithm. मेरे हाथ में कुछ नहीं है. But yeah, रात के time पे most of the people they tend to watch horror videos. Yeah. That's why. अभी अगर दोपहर का time है, it's in the morning. So people will be like, yeah, horror video दिन में कौन देखता है? So they just swipe it off. Right. इसलिए रात को ज़्यादा interaction होता है. That's why you keep seeing it. Yeah, every single time. Like, I am scrolling, your video pops up, and I'm like, ये तो देखना है मेरे को. So I watch it एकदम end तक, and then I'm like, shit, अब क्या हुआ है? And then I just see अब एक घंटे के लिए processing की video में क्या हुआ है. But it's fun. It's genuinely very fun. Thank you. Okay, so we'll begin. Yeah. So before getting into depth, I want to ask you that why horror? Because to be very honest, the generation like us is someone who is interested into horror stories and knowing about mysteries and everything like that. But then the generation like our parents, baby boomers and Gen X and all, they kind of have a different belief. Like there is a different belief in an Indian household. They might say that what is horror? Both the और ये सब बहुत अंधश्रद्धा होते हैं. फिर they get scared और they are like कि इससे दूर रहो, ये मत देखो, वो मत देखो. So why did you actually start with this content idea? Like why horror specific? So it's a short story. When I was a kid, I was really fascinated with ghost stories, mysterious videos, and all of that. But धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, I started seeing these creators कि YouTube पे बहुत सारे हैं, but Instagram पे कोई नहीं है. So first I started making horror short films on YouTube 10 years back when I was in like school and college. So since then I'm making these type of content. So 8 साल तक ये चलते गया शॉर्ट फिल्म का सिलसिला, बट ग्रोथ नहीं मिला उतना. देन आई थॉट लाइक कि यूट्यूब पे तो बहुत लोग हैं जो हॉरर कंटेंट बना रहे, बट वो टाइम पे इंस्टाग्राम पे नो वन वाज देयर हु वाज मेकिंग हॉरर स्टोरी टेलिंग. सो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल जाता एंड आई वाज गुड एट इट. Yeah, your storytelling personality is very good. Like the reason I stop and I see the entire reel is because of the way you narrate it. So it is genuinely very nice. Exactly, and because of the voice. Yeah, the voice as well and the way you put forth the story as well. Yeah. So इसलिए I thought कि like ये कंटेंट अच्छा है और चलेगा because no one else in the market is doing it. अभी तो देख के बहुत सारे हज़ारों लोगों ने चालू कर दिया, but first mover advantage अभी भी है. Yeah. So you were fascinated with the entire horror thingy since you were a kid. Yep. So like to be very honest, when I think of horror, at first obviously मेरे को मतलब पसंद आता है. मेरे को वो स्कूल के टाइम की याद आती है कि हम सब बैठे हैं रिसर्च में और हम हमारे हॉरर स्टोरी शेयर कर रहे हैं. Obviously now it's much mature version than स्कूल में तो हम बात करते थे. But it's like there is some kind of negativity associated with when someone says horror. Yeah. So you have been doing that since like you were a kid. Though has that negativity ever affected you in some or the other way? Always. So when I started like to make horror content, वो time पे I used to write scripts. और script writing ना हमेशा works when you're doing it रात को 2 बजे. So it's like
पूरा साइलेंस है अराउंड में एंड यू आर लाइक अब अच्छे से मैं ध्यान लगा के स्टोरी लिख सकता हूँ. सो जब स्टार्टिंग में करता था ना, इट वॉज अफेक्टिंग मी. मेरा मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो गया था. एंड इवन माई मैनेजर नोस कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था, शी टोल्ड मी टू जस्ट लीव इट बिकॉज मेरे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है. और इट्स लाइक इवन इफ आई एम वॉकिंग, हल्का सा कुछ पत्ता भी गिर जाता है, आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड. Okay, damn. या सो शी वाज लाइक लीव इट फॉर नाउ, जस्ट टेक अ ब्रेक. तो फिर वो यूट्यूब के टाइम का था. यूट्यूब पे देन आई टुक अ ब्रेक एंड आई थॉट अब इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे. बट या इट डज इफेक्ट, बट जैसे टाइम होता रहता यू गेट यूज टू इट. या सो अभी थोड़ा यूज टू हो गया है, बट स्टिल इट कॉन्स्टेंटली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. Yeah, okay, so but you love creating that kind of content, like even if there's a bit of negativity now as well, like when your mental health might get affected now as well, because you do research of those particular stories, right? And when you read it, there must be something happening in your mind. So, like, you love doing that side by side, or like, and because you said you're fascinated with that thing since you were kid. So, even if it is affecting your mental health, that is something you love. Yeah. So, if in a word, if I can say it, like a sweet pea. Yeah. But like it affects you, but it's your passion. You love doing it. You love the process. So that's why you're like, it's fine. That mental pressure and that thing which is in your mind, it is for a while, for like few minutes. Yeah. But afterwards, when you see the response, you're like, Yeah. it was worth it. To that, have you ever experienced any paranormal activities in your life, or your closest of friends, or anything you would like to share? Any haunted stories over here? Yeah, I did. That was the main reason I started creating Wow. horror content, and that was Actually, I thought that because if the person goes through something like this, then only they'll be interested into doing deep research of it. yeah. So I started seeing like shadowy figures and all of that. Where exactly your area? At your place? Okay. Yeah, I was in 6th standard. अगले दिन मेरा पिकनिक था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड. और स्कूल के पिकनिक के एक्साइटमेंट में इंसान सो नहीं पाता है. Like, क्या होगा कल, ये राइड पे जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. पूरा रात आई डिडंट स्लीप. एंड आउट ऑफ नोवेयर जब जैसे 4-5 बज के एंड वो टाइम पे मेरे हॉल में मेरा क्लॉक हुआ करता था. सो मैं पीक करके देखा, आई यूज्ड टू सी शैडो फिगर्स कॉन्स्टेंटली. और मेरे मन में लगता था बस आई एम जस्ट हेलुसिनेटिंग. Yeah. आई वेंट टू द पिकनिक, आई वाज लाइक क्या देख लिया भाई. No. And after few days, my parents also Started seeing yeah, it? yeah, and that was the main reason we left that house. Okay, no. But वो चीज़ ना हमारे अंदर रह गई है, that we actually saw something. पहले मेरे को लग रहा था I was just consoling myself that it's a hallucination, it's nothing. Yeah. But when my parents Yeah. तो वो टाइम पे लगा it's something serious. तो वो टाइम पे ना अभी हम किसी को भी horror stories भी बोल रहे हैं, that guy will just take it as an entertainment. वो उस चीज़ को seriously तब तक नहीं लेगा जब तक वो खुद experience नहीं करता. So मैंने जो चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस की है, तो वो मैं बस चाहता हूँ कि लोगों तक भी पहुँचे. So is this the only thing which you ever experienced? Many things. If you could share one. So apparently we visited an abandoned place. Oh yeah. It's just facts. Right. Oh yeah. So we visited an abandoned place and then हम लोग को पूरा घूमना था वहाँ पे, पूरा एक्सप्लोर करना था. I wasn't expecting to see something, but I just wanted to see proper negative vibes आती है. Yeah, right. Just on basis of that. And we were feeling the negativity because it was like 11 in the night and it was just me and my friend. तो बस एक फ्लैश लाइट, आईफोन का फ्लैश लाइट ऑन करके दूसरे से रिकॉर्ड कर रहे कि लाइक विल सी समथिंग. एंड देन ना कॉन्स्टेंटली अब वो नीचे से आवाज़ आ रहा है, वॉचमैन का. There was this guy, watchman uniform, is constantly calling us down. Like, नीचे आओ, क्या कर रहे हो ये सब वगैरह वगैरह. और हम लोग नहीं आ रहे थे. And so that guy was approaching us. Then we jumped and we escaped. अगले दिन हम लोग आए. And then we were just finding that watchman just to take a footage. कि like हम लोग सिर्फ explore करने आए थे, don't take it in the wrong way वगैरह. Then we got to know there was no watchman. Oh my god. No watchman existed. There was no watchman. And we still don't know who that guy was. So like the guy who actually approached you, did he harm you with somebody? No, we escaped. Okay, you escaped. Yeah, he was approaching us. Like, he was running towards us. We were on the So third. was it scary? Like, did you feel any negative vibe from your... That's why he ran. Okay. He was approaching us. We were looking from the terrace and he was Yeah. आ रहा हूँ मैं. Oh damn. And he looked like that appearance. Yeah. He is Watchman. Totally normal. We weren't able to see his face because we thought like थोड़ा अंधेरा है, so we are not able to see his face. But yeah, that moment was really scary. और ऐसे जैसे ये सब moments होते जा रहे हैं ना, I started to believe कि even if ghost doesn't exist, जो vibe है ना, the negative vibe, the negative aura, the negative presence, it makes you see things.
That's what I've. Okay, so it's your mentality who actually makes you Yeah, feel that. yeah. Because of the negativity and the past stories of that area. Yeah, because I have heard a lot of. I actually believe in the past stories of particular area. So just to share you an experience, there's a friend of mine Yeah. who once went to a hotel in Nainital, and I've heard this from a lot of stories. I've heard this in your reel as well, that people get some particular place for a very cheap rate and they just go for it. Yeah. So my friend went for it, like my friend's family, and they bought that place and they were like residing over there for two to 3 days. And in that group, what happened with them is at late night, someone knocked the door. So they opened the door, and then there was a lady, and her legs were as a ulta. Okay. Yeah, so like obviously everyone was sleeping at home. Her father, he woke up and he opened the door, and everyone was sleeping. No one was actually heard it, heard the doorbell and everything. Only the father did. So the father came outside and he opened the door and he saw that pair were ulta, and there was like a proper lady. Like you can see her, she's not a normal human being. She's something else. Yeah. So that lady started to threaten him, ki give me your kid, give me your child, like my friend. So that the lady started to threaten him, ki give me your kid, I know how much you love her and I know how much you mean to her and everything like that. So do me that, or else this will happen to your family, that will happen to your family. So what he did is he started chanting his spiritual texts and everything like that. He started saying all the things which they usually do in their religion. Yeah. And then she disappeared. And the next day, what happened is like she disappeared. Then the guy, my father's friend, my friend's father. So he is the kind of person who would never cry. Like he is very, strong kind of person. He would never cry. Yeah, he would never cry. And after that incident, he went up to his daughter and he cried his heart out a lot. And then the next day, what he did was he packed their bags. They went outside. And then they took up a bus. So basically they were interacting with that bus wala person. And that bus wala person is like, where were you residing? So they were like, here, ye jagah pe ye room hai hamari. So he's like, कि तुम्हें पता है ये क्या था? So they are like, नहीं हमें तो सस्ते में जगह मिली, अस्सी हमें ले ली. So he's like कि ये ब्रिटिश के टाइम के ज़माने का एक जेल हुआ करता था. So ब्रिटिश के टाइम पे इधर फांसी मिलती थी लोगों को, and उसी फांसी वाली जगह पे आपने रिसाइड किया था. So that makes me think कि ऐसे बहुत सारे haunted जगह होंगे, and there must be a backstory to it. Of course. So there's a reason why they provide that place in a cheap rate. Yeah. हर एक चीज़ की बैक स्टोरी से किसी का रहता है कि यहाँ पर लीकेज हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है. और मोस्ट ऑफ द एरियाज जो टूरिस्ट प्लेसेस है, Yeah. वहाँ पर इफ़ यू एवर गेट एनी प्लेस जो सस्ते में मिल रहा है, नेवर गो फॉर इट. नेवर. उसके पीछे कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होती है, स्पेशली टूरिस्ट प्लेस. क्योंकि जो घर तुम देख रहे हो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं Yeah. अपना ऑरा लेके. Oh, yeah. Right. सो यू नेवर नो किसके पास क्या कौन सी एनर्जी है, क्या नेगेटिव वाइब्स लेके आ रहा है और उस घर में छोड़ के गया है. सो मैं ये सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट. You have experienced something similar like this? कि you were gone to some Yeah. place tourist. या What was this? Like where did you go? apparently we went to Manali. Okay, Manali में there was These things are very, this reason are very haunted. I don't know why. मेरे को ऐसा बचपन से ऐसा है कि ये जगह haunted है मेरे लिए. आदत पड़ती है. movies वगैरह Movies like past movies में they were always shown कि मनाली पे रोड ट्रिप Yeah. पे जा रहे थे and then अचानक से वो दोस्त आ गया, अचानक से भूत आ गया, ये सब वगैरह. So we have that in mind, kind of like करण जौहर का वाइब्स जैसा आ जाता है मूवीज का, उसी तरीके से. So we went to Manali. वहाँ पर एक कॉटेज था. तो कॉटेज में इट वॉज अ 3-star कॉटेज. तो वहाँ पर हम लोग वी वर स्टेइंग एंड देन आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक नेगेटिव वाइब फील होने लग गई, लाइक समथिंग इज रॉन्ग. नॉट इन माई रूम बट माई फ्रेंड्स. सो हम लोग सब फ्रेंड्स लोग गए थे. तो फ्रेंड के रूम में मैं जैसे इंटर किया ना, मेरे को बहुत अजीब सा वाइब आने लगा कि देख कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर. और इस चीज़ की वजह से ना ट्रिप पे भी आई वॉज लाइक एकदम शांत सा था मैं. लाइक आई वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो गया. I was constantly thinking of all the negative things which has happened in my life, out of nowhere, without any reason. Okay, so because of that one negative vibe, you started to think all the past things which happened to you. Yeah. So is that like a fault of that negative aura itself? Okay. So just because of that particular negative vibe, It makes you actually do that. But that negative aura makes you actually think about all the past things which happened with you. you constantly think of all the negative things, all the bad things which you have done, and all the bad things which have happened to you. Yeah, okay. So yeah, that was the story. Okay, so do you think that this negative auras or negative energy which you get are in some way, like
in some way influence you so much that you do the things which you never thought you ever will. Because see, it's like that I have never had any paranormal experience, but I know friends who have had this experience. And either they see some shadowy figure, or they see some person doing this, or they see some person doing that, or anything like that. And it's like, I have heard from every single one of them that they get some kind of negative energies beforehand. Yeah. First they start feeling it, and 20 minutes into it, they start actually experiencing that. So it's like, does it happen with everyone or any particular people? Because I've heard of terms like psychics and some other people like that. So these are the person who are actually knowledgeable in that thing. So firstly, I used to think that only these people get those negative energies, and they only will be able to actually figure out what is happening around them. But then, since you told me, and I've heard it from my friends, that every single person start to experience those negative energies beforehand. I'll be really honest with you. If a person has all the positive things in his mind, he'll never see a paranormal. He'll never get a paranormal experience. He'll never see a ghost. Even if a ghost is around him? No, he won't be able to see it. Because he has all the good things in his mind. He's constantly thinking of all the positive things. Yeah. So, if we come to a conclusion, all the people who are depressed or who are having negative thoughts, those are the ones who can easily see it. Because they can easily get manipulated with the negative energy. And they will start to hallucinate for actually see things. I'm 101% sure if anyone is saying that I saw a ghost, I saw a spirit, 50% of them didn't even actually saw something. It was just their mind which was hallucinating and making them see things. So do you actually think there are ghosts? Yep. And I know types of ghosts. Like there's jinn, there's this, there's that. So See, ghosts. does actually types exist? Ki just in general ghosts are the spirits who didn't actually get the chance to fulfill their things when they were alive. So that now that's why they are ghosts. This is the thing which I had in my mind since I was a kid. ये ghosts वो होते हैं जो मर गए हैं, but उनके सपने अधूरे रह गए, इससे वो भी कोई बन के घूम रहे हैं. That was just our parents trying to mess up that it's not that scary. But जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन तीनों के अलग अलग भगवान होते हैं, but we still call them God. In the same way, हर एक religion के अलग अलग type के ghost होते हैं. Okay. There are just different names to it. जैसे हिंदू में हम बोलते हैं भूत, पिशाच, चुड़ैल. Yeah. And Muslim में they call jinn. Yeah. Okay. And Christian में they call it like just the spirits of the people. Okay. So everything is the same. It's just like male, female, ऐसा सब हो सकता है, but everything is the same. It just had different name to it. Damn. Okay. So basically, it actually makes me think that sometimes these ghost stories are associated with the people who do Kala Jadoo. मतलब I have read this somewhere कि like I have heard about the story. There's Burari death as well. So I have heard about that कि मतलब ऐसा कुछ तो काला जादू हुआ था, and काला जादू की वजह से वो सब मौत हो गई थी, या फिर काला जादू हुआ था इसलिए ये रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए इधर नेगेटिव वाइब्स होती है. तो is actually the ghost like the entire haunted places? Does that places have connection with Kala Jadoo? See, I'll tell you, लोगों को ना बहुत misinterpretation है about काला जादू होता क्या है. People actually think कि काला जादू मतलब ये किसी का बात ले लिया हमने, इस पे ऐसा कर दिया, वो इंसान मेरे वश में हो जाएगा, मेरे से शादी कर लेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट काला जादू एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. उसमें बस ये चीज़ है, कुछ भी जैसे लेमन लेते हैं या कुछ भी बॉडी का पार्ट लेते हैं, वो चीज़ लेके ना सिर्फ काला जादू से एक चीज़ होती है, नेगेटिविटी उस इंसान के माइंड में लाना. दैट्स इट. काला जादू से और कुछ नहीं होता है. ये सारी चीज़ें बाहर ना कंस्पिरेसीज है, सब फेक है. बट काला जादू से सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पहुंचाई. So you like pinpoint that person and वो person को फिर वो negative energies आ जाती है. Because you take a part of his or like a hair or something. Hair or something. तो उससे नेगेटिव एनर्जी जाती है. जब नेगेटिव एनर्जी जाती है तब दैट पर्टिकुलर ह्यूमन ही स्टार्ट्स टू सी थिंग्स. और जब इंसान वीक रहता है ना तो वो इसीलिए मैनिपुलेट हो जाता है, भले वो बोस से या चाहे वो दूसरे इंसान से हो. लोग बोलते हैं ना मेरे वश में आ जाए, स्टार्ट बिहेविंग नाइस टू मी. सो इफ दैट पर्सन इज वीक एंड इफ यू गो एंड टेल हिम एनीथिंग, बिलीव इट बिकॉज ही इज ऑलरेडी वीक. सो काला जादू बस ये चीज़ होता है, जस्ट टू मेक अ पर्सन फील मोर नेगेटिव और डिप्रेस्ड. दैट्स इट. Okay, so it's all about the energies which they have inside them. The energies are the one who like make you see things, or the energies are the one who make you not see things. Okay, now, do you think that if sometime, like let's say if in future I see ghosts, do you think that if I chant my religious text, will that help?
और लाइक ऑन द स्पॉट लोगों के दिमाग में वही आता है रिलीजियस सेक्स या फिर भगवान के नाम, आइदर दे गेट ऐसा बेहोश होकर गिर जाते हैं या फिर रिलीजियस सेक्स स्टैंड करना शुरू करते हैं, या फिर मैंने सुना है कि लोगों को अगर नेगेटिव एनर्जीज हो रहे हो तो दे सिट इन वन प्लेस एंड दे डू मेडिटेशन. So do you believe in that? Yeah, because as I said, you're totally full of negative energy. Yeah. And if by chanting some words or some religious things, your mind gets positive, so of course you will not see it anymore. Yeah. You're constantly thinking of the negative things. And if you're thinking about God, God's को सुन के हमारे mind में positivity आती है. So our mind changes from negative to positive. उससे कुछ changes नहीं आते, to be very honest. But तुम्हारा mind change हो गया ना, तो of course तुम्हारे आजू बाजू की surrounding automatically change हो जाती है. It makes us feel more positive. That's the only difference, and that's why it actually works. Meditation से भी क्या होता है? Mind feels relaxed. Mind relax हो गया, negative energy कम हो गई है mind में. We are not thinking of the negative things. We are good to go. We won't see ghosts anymore. Okay. Wow. So there are many places in Mumbai. I have heard कि ये जगह पे ghost होते हैं, ये जगह पे भूतिया जगह है, ये वो है. And I have heard a lot about RA colony. Okay. A lot. And there are like different things I heard from different people. बोल के कि आरे कॉलोनी में रात को ये बजे नहीं जा रहा है, ये वाले रास्ते पे रात को ये बजे नहीं जा रहा है, वो वाले रास्ते पे रात को ये बजे नहीं जा रहा है. एंड does it actually have any backstory to it? So rumor जो चीज़ होती है ना, बहुत easily spread होती है. ठीक है? People are not interested in the truth because truth is boring. जब छोटी चीज़ है ना, वो easily spread होती है. People are actually interested in it because it's away from the reality. So द मेन रीज़न आरे कॉलोनी का जो रास्ता है वो रात को बंद रहता था बिकॉज पहले बहुत जंगली जानवर, चीता, शेर, ये सब लोग एक्चुअली रोड पे आ जाते रात को. सो दैट वाज द मेन रीज़न दे टोल्ड कि सनसेट के बाद आरे कॉलोनी का रोड बंद रहे. बट पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग रूमर्स कि नहीं रात का टाइम है, शायद भूत हो सकता है ऐसा. अब जब लोगों के माइंड में एक चीज़ आ गई ना, तो इवन इफ यू आर राइट नाउ थिंकिंग कि आरे कॉलोनी में देयर माइट बी अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट something is haunted. So whenever you'll go from RA colony, you'll feel that vibe because you're thinking about it. Yeah. As I said, everything is in our mind. So because of that rumor, now everyone thinks RA colony में भूत है. Possibility ये भी है कि actually हो भी सकता है. But this is how it started. Okay. The main reason वो बंद रखा गया था is because of the animals. Because बहुत सारे लोग मरे भी थे वहाँ पर जंगली जानवर के वजह से, which people linked to कि like भूत की वजह से हुआ है. I know I'm a horror creator and I shouldn't go against it, but जो fact है वो fact है. Yeah. Agree. So coming back to Burari deaths, so out of all the mysterious stories, this thing has stuck in my mind. मैंने खुद एक दूसरा पॉडकास्ट देखा था about Burari death. Okay. And it's like कि वो वाले पॉडकास्ट में मेरे को बताया था कि it is about काला जादू, बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुए थे, इससे ही हुआ था. एक इधर बताया गया था कि वो फैमिली ही वैसी थी कि उन लोग ने ही वैसा किया एंड एवरीथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो द ट्रुथ बिहाइंड इट कि एग्जैक्टली क्या था. Okay. So I remember just a few minutes back I told you there was a time कि मैं YouTube videos बना रहा था and my manager told me like just stop making those videos. Yeah. वो मुझे इफेक्ट क्यों किया था? Just because of the Burari cart video. Yeah. That one video, it's like fucked my mind to be very honest. Because जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने ना बहुत सारी थियरीज थी जो मैंने खुद ने लिखी थी रिसर्च के बेसिस पे कि अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है. एंड आफ्टर 1 year नेटफ्लिक्स रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट्री, वो सारी चीज़ें थी जो मैंने अज्यूम की थी. सो माई ओल्ड वीडियो वेंट वायरल बिकॉज पीपल थॉट कि लाइक ये तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के पहले आया एंड ही वॉज वॉट एवर ही वॉज टेलिंग एक्चुअली नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में भी वही दिखा रहा है. सो दैट वॉज द टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन माई कॉन्टेंट कि लाइक जो बोल रहा है रिसर्च कर रहा है बंदा, अच्छे से कॉन्टेंट बना रहा है. टॉकिंग अबाउट द बुरारी फैमिली, सो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ काला जादू कुछ नहीं था. इट वॉज ऑल रिलेटेड टू अ ट्री. सो जो मेन गाय था ललित, उसके बेसिस पे सारा चीज़ हुआ. ललित के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी बहुत पहले. सो और उस चीज़ की वजह से बहुत ललित पैरानॉइड हो गया एंड देन उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से ही लॉस्ट हिज वॉइस. ठीक है. एंड दैट 1 fine day he slept और उसके नींद में ना उसके डैड आए and he started telling him कि I know you miss me and there are few things, if you'll do these type of things you'll be successful, everything will be back to normal, everything will be good. ललित उठा
ऑफ कोर्स अब वो किसी को कुछ बोल नहीं सकता. He took a paper and a pen and he started writing it down in a diary और फिर सबको दिखाया. फर्स्ट पहले लोग ना बिलीव नहीं करने लगते हैं, तो फिर वापस एवरीथिंग यूज्ड टू सी बैक व्हेनेवर यूज्ड टू स्टिंग. तो वो थोड़ा डाइसी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता. Yeah, how is it fun? सो अगेन व्हेन ही यूज्ड टू स्लीप अगेन, वो जाके बोलता था अपने डैड को कि कोई बिलीव नहीं कर रहा है घर पे कि आप मेरे से बात कर रहे हो ऐसा. तो वो बोलता था ठीक है, अब प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि दैट एक्चुअली एक्सिस्ट. तो तू ये चीज़ें कर, तेरी आवाज़ वापस आ जाएंगी. एंड हिज वॉइस एक्चुअली केम बैक एंड दैट वाज द टाइम पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि कुछ तो है, लाइक समथिंग इज देयर. सो उसकी आवाज़ आ गई, घर वाले सब सीरियस लेने लग गए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो. अब धीरे धीरे ना उसके डैड बोलते थे कि हाँ ये चीज़ें करो, सक्सेस का पाथ मिल जाएगा. दे यूज्ड टू डू इट. उन लोगों का बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, एवरीथिंग वाज वर्किंग ग्रेट. एंड चलते गया. और फिर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जब बोला था कि इस लड़की की शादी करा दोगे, जो एक घर में लड़की थी. उसकी शादी का डेट फिक्स हो गया. एक हफ्ते बाद उसकी शादी है और शादी के जस्ट फ्यू डेज बैक सब लोग ने वो फांसी ली. एंड दैट वाज द रीज़न कि लाइक उसके डैड ने बोला कि तुम फांसी लेने जाओगे बट तुम्हारे मरने के पहले ही मैं आ जाऊँगा तुम्हें बचाना. द फादर वुड डाई. So the father said in the dream to Fasi. Yeah. And before you'll die, And everyone agreed to that. everyone agreed. Right? कितनी सारी Okay, so they said कि अच्छा मतलब the father will come and Yeah, save and them. save them. Oh my god. And they believed it क्योंकि इतनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें उनके आँख के सामने हुई. Yeah. They were like कि हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है अब तो. क्योंकि जब एक इंसान जो बोल नहीं सकता उसकी वॉइस वापस आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रीम. Anything can happen. Understand. और वही हो गया ना कि कॉन्स्टेंटली जब 2 साल से ये चीज़ हो रही है तो मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. So was it actually real कि ललित के सपने में उसके पापा आते दैट डायरी स्टिल एग्जिस्ट एंड पुलिस ने वो पकड़ा एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें वो डायरी पे लिखी है. Was it like उसने ही उसकी हो सकता है. something We never- like that? we Yeah, never- we never know You that. never know. But But how is it possible कि every single day his father will come in his dreams and tell कि ये करो वो करो and all? even if not, even if he wrote it himself, Yeah. still वो जो लिख रहा है उससे That's what right. so something is fishy Basically, yeah. and something is strange. So इस वजह से जब मैं ये सब रिसर्च करने लग रहा था तो मैंने ना बहुत सारे ललित को स्टडी किया उसके चाइल्डहुड के बारे में जो न्यूज़ वगैरह पे नहीं दिखा रहा है. आई टू रीड आर्टिकल्स वगैरह और थोड़े कॉन्टैक्ट हो माए जो एक्चुअली थोड़े नोन में हैं उनके साइड से. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई थी और एक कम टाइम में इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा. Damn. I used to see Lalit every night when I used to school. Oh my god. In I know. your dreams There's or like it affected Hallucination. had it I know actually exist नहीं कर रहा है but वो इतना मेरे दिमाग में है ना मेरे को दिखने लग गया रात को. Yes. And I wasn't able to sleep at all. तभी फिर वो हो गया सी भाई अब बस कर But- थोड़ा ब्रेक ले लेते. बट वो एक ऐसी चीज़ है ना इतना ज़्यादा इफेक्ट किया मेरे को कि अभी भी कुछ रात ऐसे रहते हैं कि जैसे अभी यू सेड इट अभी मैं घर पे जाऊँगा नाउ इट्स अगेन इन माई माइंड. I'm so sorry. Fine. I'm used to it. Okay, oh my god, but I believe it this thing when people say कि मेरे सपने में मेरी मरे हुए फ्रेंड आए थे और like the person who is dead and वो मेरे आके सपने में ये बोला था कि ये करो फिर वो हुआ था. And I some other part of me believes in this thing. I don't know why. But is it actually true that ghosts can come in your dreams and maybe manipulate you to do something? According to me, it's not the ghost. It's you yourself. कि मुझे कुछ चीज़ लग रही है Yeah. and I want someone else to convince me. Oh. So automatically your mind is like कि मुझे एक ghost आया. Someone else tried to convince me Yeah. for this, even though I wanted this to happen. So I think ऐसा भी हो सकता है. But if you believe in science, तो science में there are like parallel universe. Yeah. We say the term deja vu. Yeah. हमें मुझे डेजा हुआ. Deja vu. Like for example मुझे डेजा vu हो रहा है कि I already came Case. this cafe and I had a podcast with you. So ये with डेजा vu का जो टर्म है ये क्यों बोलते हैं साइंटिफिकली क्यों लोग मानते हैं कि डेजा vu एक्चुअली एग्जिस्ट कर. सो अपेरेंटली पैरेलल यूनिवर्स है अर्थ के जैसे बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं जहाँ पर तुम्हारे क्लोन्स रह रहे हैं. सो मे बी नॉट यू but one of your clone actually visited this cafe and had a podcast with you and now you're having it. That's why you think like this. You believe in this? Yeah. This things are one parallel universe. I'm hearing for the first time what exactly deja vu means. First of all, I knew, but उसका scientific reason नहीं पता था. या बहुत सारे लोग को पता नहीं है. They just know the like कि वो बोला जाता है उस चीज़ को. But ये चीज़ की वजह से वो term derive हुआ था like deja vu. So your mind is connected to the parallel universe वाला your mind in some or the other way. Because मतलब अगर मैं इधर मतलब मेरे को deja vu हो रहा है कि मैं इधर आ गई हूँ
तो इट मीन्स वो पैरेलल यूनिवर्स वाला जो मैं थी वो आ गया है, तो इट्स लाइक द कनेक्शन. तो कनेक्शन नहीं है, बट बोलते हैं ना ग्लिच इन द मैट्रिक्स. तो समटाइम्स देयर इज अ ग्लिच कि लाइक हाँ अरे डूड, दो चीज़ एक ही साथ कनेक्ट हो गई है. मैं तो वहाँ पर भी मुझे अगर कनेक्टेड रहता तो मुझे भी पता रहता वहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा है. So there are many parallel universe according to you. Yeah, see, if there is a black hole, which is scientifically proven. Yeah. So there are so many things which we don't know. It's just a mystery. The universe is unlimited. Like it doesn't have any end point. It just keeps on going. So बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की है, and which has strange endings to it, strange thoughts to it, और ऐसी चीज़ें so अभी तक हम पहुँचे भी नहीं है. Like for example, अभी से अगर हम 200 years back, 300 years back अगर हम ये चीज़ सोचते हैं कि फ्यूचर में एक सेल फोन आएगा, फेस टाइम होगा, आप लोग बिलीव ही नहीं कर सकते हो चीज़. फ्यूचर कभी आगे बढ़ जाए बट ये चीज़ नहीं हो. एंड नाउ इट्स एक्चुअली हैपनिंग. सो आने वाले 200-300 साल में क्या होगा आप लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट हैव अ विजन. तो उस तरीके से देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अनएक्सप्लेन्ड, एंड दीज आर टाइप ऑफ वीडियोज़ विच आई रियली वॉन्ट टू शो माई ऑडियंस. लाइक दिस इज द मिस्ट्री, स्ट्रेंज थिंग्स अराउंड यू. Actually, the strangest thing, because you said mystery, the next strange thing which I can think of is past life and afterlife. Yeah. What is exactly that according to you? Is there actually a past life to the person, and is there actually an afterlife to the person? See, सारे रिलीजन अलग अलग थॉट रखते हैं इस चीज़ के. Right, yeah. कुछ मानते हैं कि पास्ट लाइफ होती ही नहीं है. कुछ मानते हैं कि लाइक यू डायरेक्टली गो टू हेल और हेवन. कुछ लोग मानते हैं व्हेन यू डाई तुम्हारा जो अगला जन्म है, लाइक ऐसे 7 जन्म होते हैं, ऐसे तुम्हारा अगला जन्म डायरेक्टली आ जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू मी नन ऑफ इट इज ट्रू. ये सब नो नथिंग, नो पास्ट लाइफ, नो आफ्टर लाइफ, नथिंग. Just one life. Yeah, just one life. You die. So what happens to you when you die? You die, you're gone. You're just gone into And your spirit, like your atma inside. Spirit exists. That's what I'd say. Spirit do exist. And it's just around. Yeah, it just keeps. So there are like thousands and millions of people roaming around. Yeah, roaming around us. Maybe. And we can't see them because obviously they are non-existing. But if even there's a slight chance कि afterlife exist करती है. So ये मुझे सिर्फ एक स्टोरी थी जिसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव होने लग गया था कि मेरे थॉट के अगेंस्ट आई डोंट बिलीव इन आफ्टरलाइफ. बट इस चीज़ की वजह से आई स्टार्टेड टू बिलीव कि चांसेस हो सकता है. सो देयर वाज अ मैन, उसका पैसे की वजह से किसी के साथ थोड़ा इशू था. एंड द सामने वाला गाय वो उसको एक्स लिया और एक्स लेके उसको यहाँ पर मारा हुआ था. एंड देन ही डाइड. और उसने इसके बॉडी को दफना दिया. लाइक आफ्टर 7 to 8 years, you know, the body gets decomposed but the bones are still there. Yeah. After 8 years, थोड़े आगे के विलेज में there was this guy, वो अचानक से आया and he's like कि मेरे को पता है मेरा past life क्या था. And he had the same scar यहाँ पर. When he was born, he had the same scar. So he took people you were like मजाक कर रहा है, but he took people, every one of his family, and he said मुझे पता है मेरे को कहाँ दफनाया गया. He took them to the grave जहाँ पर उसको दफनाया गया था. लोगों ने खोदा और उसके बोन्स मिले एक्चुअली. Damn. So ये जब स्टोरी है, this is a real story. Even I have a real story similar like this, that a person, like there was a person who is a psychic right now. Yeah. She was sharing this in some other podcast and I heard that she was sharing ki till the age she was 10 years old, she used to मतलब like remember all the things which happened in her past life. तो मतलब उसको याद आता था कि ये हुआ है, वो हुआ है, and she used to tell her mom and dad about it. And obviously people won't believe it because क्या ही है past life, मतलब क्या ही तुम लोग के पास पुरावा क्या है कि मैं past life पे believe करूँ. But then she insisted upon it, and till the age like till she was 10 and 12 years old, she had clear vision of everything that happened in her past life. So even that, like even I agree to you कि even I am not sure what exactly is the afterlife and what is the past life. But because of incidents like this, it makes us question. Yeah, exactly. But we won't be sure about it when this scientifically proven हो जाए. One of such unsolved mysteries in the world. या तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो एक्चुअली मेरे फैमिली में किसी के साथ हो या मेरे साथ हो, मुझे पता चले. But of course I won't be alive अगर ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो. So yeah, I guess it will just be a mystery forever. Forever mystery. It is actually a forever mystery because जिनको खुद को करना है वो चीज़, like if let's say if some other person dies, ex person dies, and अगर उन्होंने वैसा
किया होगा एंड फिर वो वापस आए बोले कि मैंने पास्ट लाइफ में ये किया वो किया व्हाट लाइक वी कैन रियली बिलीव देम ना 100% व्हाट लाइक आई बिलीव लाइक लेट्स से आई बिलीव देम कि हाँ आई बिलीव यू व्हाटएवर यू आर सेइंग इज ट्रू बट देन वी एक्चुअली डोंट बिलीव सम थिंग्स सर्टेन थिंग्स लाइक दिस वी कैसे ही हो सकता है कि तुम लोग को सभी पास्ट लाइफ का याद है और कैसे ही हो सकता है कि आफ्टर लाइफ है See, because of these kind of curiosity which people have, इस वजह से हमारा content चलता है. Because These are the curious things actually people want to know. हमेशा रहेगा. वो curiosity हमेशा रहेगी. But I would highly suggest to each and every viewer who is watching this lead or who is watching this video कि horror doesn't only means कि ghost के related है, ठीक है? Horror means all the mysterious things. जैसे if you watch a movie which is तुम्बाड़ में भूत के रिलेटेड नहीं दिखाया है. इट्स जस्ट अ मिस्टीरियस थिंग. थोड़े क्रिएचर्स है बट वो जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें एक हॉरिफिक फील आएगा. तुम्हें डर लगेगा. इनसे ज़रूरी नहीं है भूत के थ्रू ही तुम डरो. बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें जिसके अलावा भी तुम डर सकते हो. दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज हॉरर. तो हॉरर अगर तुम देख रहे हो तो उसको भूत के तरीके से ही मत देखो, एक्सपेक्ट मत करो एंड ऑलवेज टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट. उसके पीछे पड़ मत जाओ कि ये चीज़ सच है झूठ है, तो तुम्हारी पूरा लाइफ ना उसी में निकल जाएगा. बट यू विल नेवर गेट एन आंसर. And then your mind also gets stuck in that one thing. Exactly. Continuous loophole बन जाएगा. Yeah, and you start feeling negative again. Okay. Actually, so you are also a mystery creator, mystery story creator and all. When you search, like when you research about mysterious story, because you did a series अभी murders के बारे में, so when you research about all these things, is there any specific mystery which has, according to you, remain unsolved? Because there are few basic things India में जो होते रहते हैं, like there's Bandar food का story. Then one another thing which I know is about शनिवार वाड़ा, and there are many other points which I know. And वो ना मेरे लिए अभी तक like mystery कभी solve नहीं हुई है. And I feel कि there may be ऐसा बहुत सारी mysteries all around the world, not just in India, जो कभी solve ही नहीं हुए हैं. And it's like ऐसा कैसे ही हो सकता है kind of. So while you were doing research, have you actually come across ऐसा कुछ? Yeah, so there's this serial killer जिसको टर्म दिया गया था स्टोन मैन मर्डर्स. ठीक है. उसके विक्टिम्स हमेशा जो भी फुटपाथ पे गरीब लोग सो रहे वो होते हैं. सो wherever a homeless person used to sleep on the footpath, वो रात को आता था, बड़ा सा पत्थर लेता था, उनका फेस क्रैश कर देता था इन टू रन अवे. और ये वो टाइम की बात है जब कैमरास वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे कहीं पर भी रास्ते पे. और उसने अभी तक मोर देन 250 लोगों को ऐसे मारा है. सो पहले ही वॉज डूइंग इट इन मुंबई में उसने किया. देन ही वेंट मिसिंग. किसी ने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, कोई उसका टेस्ट नहीं, कुछ पकड़ा नहीं जा पाया. मुंबई में किया. मुंबई में उसने 20-30 लोगों को मारा. देन ही टुक अ ब्रेक. अब उसको पता है या एंड देन what does it do like मार के क्या कर? नथिंग. इट्स Just kill. या जस्ट किल देम. अभी अगर कोई रिच इंसान है तो अभी उसको समझ में आता है कि पैसे के लिए शायद किया है. तो जो जब इंसान का कोई मोटिव नहीं होता ना, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ सीरियल किलर. सीरियल किलर का कभी कुछ मोटिव नहीं होता. दे जस्ट वांट टू किल बिकॉज दे लाइक डूइंग इट. जब मोटिव रहता है उसको हम मर्डर बोलते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड व्हेन अ सीरियल किलर डज इट. सो ये स्टोनमैन मर्डर जब अभी मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में पुलिस फैल गई है उसको ढूंढने के लिए. अब वो वहाँ से हट के वेस्ट बंगाल चला गया. अब वेस्ट बंगाल में उसने किया, फिर ऐसे कर करके पूरे इंडिया में किया. और मोर देन 250 पीपल ही हैज़ ऑलरेडी किल्ड एंड स्टिल किसी को किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है. एक इंसान था बस जो जब उसको मार रहा था कि वो कप एंड ही रैन अवे. तो उसने ना उसका एक स्केच बनाया था और वो स्केच भी गायब हो गया. How? Still a गायब as in like. गायब हो गया. And what about this person? That person can draw the sketch again now. Yeah. So the person is. अब वो बोल कर रहे थे नहीं एक्यूरेट नहीं बन रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है. जस्ट लाइक ट्रीज, हम सपना देखते हैं, वी वेक अप बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वी फॉरगेट अबाउट इट. Yeah. बस थोड़ा थोड़ा याद रहता है. तो अभी उसको याद है बट लाइक वो उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा जितना फर्स्ट टाइम बनाया था क्योंकि उसने फ्रेशली उसका फेस माइंड में रखा था. बट अगर तुम्हें कोई मारना चाह रहा है इंसान तो तुम्हें उसका फेस हमेशा याद रहेगा. लाइक बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ दैट पर्सन कि अब कभी और वापस दिख गया तो. बट स्टिल दैट टाइम फॉरगेट हाउ ही लुक्स. Damn. So that's a unsolved mystery. Yeah, And that guy still at loose. Yep. Oh, that is scary. That is something that is scary. Okay. Actually, which makes me come to my next segment, which is, do you believe in those theories जहाँ पे ghost बुला सकते हैं, spirit बुला सकता है किसी
के शरीर के अंदर, because you know when I was a kid हम ना वो चार्ली वाला गेम खेलते थे, so we make it चार्ली, yeah. And what happened with me is कि स्कूल की रिसर्च चल रही थी, my group we were sitting together and हमने ऐसे चार्ली किया था, yes no लिखा था. And I was like, मैं question पूछेंगे, so I asked a random city question, okay, and it actually turned to a yes. And I got scared. And I genuinely got scared. Because if I am scared, then I genuinely get very scared. So I got scared. And I was like in, 6th, 7th standard. So I got scared. And I was ऐसा quiet, ऐसा बैठ रही थी मैं. And my friend came up and she's like, अरे don't worry bro. मैंने ऐसा नीचे से ऐसा टक किया था इसलिए हुआ. And I'm like, no, that's not possible. I actually saw it. Right. Don't you believe in that sandy thing? So अभी recently I've talked about this. कि चार्ली जो गेम है, I think I've played it so many times. और हर बार पेंसिल मूव करता है. I don't know how, but पेंसिल मूव करता है. Even तो बाकी कुछ स्ट्रेंज नहीं होगा, but वो पेंसिल मूव करता है. And people tell me कि चार्ली is a good host. He helps you. मतलब अगर तुम लोग को कुछ सही होगा, and if he'll actually come and shift test and all. And मेरे को नहीं बनी पता था, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछ दिया, and it actually moved. I was like, oh. So same like a Ouija board. Like What is that? The board? Yeah. Like Ouija board. Some people call it Ouija board. उसमें alphabets रहते हैं and people put their fingers. Put the finger, yeah. Yeah, and that thing actually starts to move. So is this all true? So वो games ही उसलिए बनाया गया ना, क्योंकि people know कि हर बार move करेगा, right? या तो वो move करेगा या तो कोई तो एक जैसे Among Us में एक sus रहता है, उसी तरीके से कोई तो एक है. Will make a fool out of everyone. Will move it like bro automatically move हो रहा है. But Charlie is so like pencil ऐसा even if you do ऐसा टक वो नहीं होगा pencil वैसा proper जैसा shift होता था. So that's what I'm saying ना, कुछ ना कुछ तो science रहती है उसके पीछे. That's why these board games are created. So you actually think कि इसके पीछे it's not ghost, it's the science. There can be a ghost, but if you are doing it in a place, अभी खुद के घर पे करोगे ना, so वो नहीं है, वो ghost के through नहीं है. Unless तुम्हारे घर में नेगेटिव वाइब्स है या कुछ पास्ट स्टोरीज है, तब अगर हो रहा है तब मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी अबैंडन प्लेस पे ना पीजी बोर्ड लेके गए. तब अगर हो रहा है ना, तो क्योंकि कोई ये चीज़ सबकी फटी हुई है, कोई पर्पसली नहीं करेगा, तब हो रहा है, हमें पता है कि हाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है. ओके. बट अगर खुद के घर पे करोगे, आई वुड हाईली सजेस्ट चार्ली या तो कुछ पीजी बोर्ड अगर तुम कर रहे हो अपने घर पे करोगे तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेना. डोंट थिंक ऑफ इट कि लाइक समथिंग हैज एक्चुअली हैपेंड. Unless घर में कुछ negative vibes. So even this is an unsolved mystery if it is linked to science. Yeah. I'm telling ना, there are so many mysteries जिसका आंसर अभी तक कोई नहीं दे पाया. Not even scientists, not any human, not even any entity, and not even God. Do you believe in that thing कि वो लोग ऐसे हाथ पकड़ के ghost को बुलाते हैं and actually ghost आता है and ghost जैसा wave like वो spirit आता है अपने शरीर के अंदर and वो ghost जैसा behave करने लगता है. I've seen this in movies. I've never actually heard stories of this happening in real life. I've seen this in real life, but ये हमेशा मैंने ना मंदिरों के बाहर देखा है. Like जब गणेश चतुर्थी होती है तो मैं I was a kid, हम लोग आरती कर रहे, लास्ट के विसर्जन की आरती कर रहे, एंड एक अंकल थे like who was very known to me. वो अचानक से he started speaking like a female, like माता आ जाती है अंदर, ऐसा doesn't know. So the God is Yeah. I know about this, the God coming inside. So he was talking to himself in two different voices, like एकदम अपरिचित मूवी के जैसा. It was very strange to me क्योंकि मेरे आँख के सामने ये सब चीज़ हो रही थी. But then I feel like if you are totally devoted to God, then this can happen to you. Yeah. But एक conclusion में ये दूंगा, everything which has happened or will happen to you is all because of what you have in your mind. Okay. It's a mind game. Yeah, it's a mind game. If you are having negative thoughts, spirits can easily attract you. जैसे मुस्लिम्स में ये कहा जाता है कि जो जिन होता है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा इसी. बट देयर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू सिम्टम्स, अगर तुम वो रख रहे हो अपने साथ तो जिन कैन ईजिली गेट अट्रैक्ट. सबसे पहले पाल के रखते हैं लड़की लोग वो, और मेल और फीमेल एनिमल, अगर वो परफ्यूम ज़्यादा लगा के फिर रहे रात के समय में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें. इफ़ यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी एट नाइट टाइम देन या द जिन्स easily get attracted. Yeah. Okay, so before we come to the conclusion, I have two more things to actually discuss about. And first thing is a story which I encountered when I was a kid.
तो आई वॉज गोइंग एट अ सर्टन डे, सो मैं मेरे रिलेटिव के घर पे जा रही थी एंड एक लेन आती है एंड इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल एरिया, जस्ट आती है एक लेन है, इट्स जस्ट अ बेसिक लेन एंड आई वॉज गोइंग एंड आई स्मेल आ रहा था एक चीज़ का, आई गेस इट वॉज अ बासमती राइस और समथिंग, स्मेल आ रहा था एंड इट वॉज डे वन ऑफ दैट हैपनिंग। आई थॉट कि कोई तो कुछ तो पका रहा होगा, इट्स फाइन, एंड इसलिए आई वेट and then next day I again went from the same lane and the same smell came, like एकदम exact same, I think it was basmati rice only something, तो the same came and फिर मैंने आजू बाजू देखा कि किधर पक रहा है क्या, किधर रेसिडेंशियल एरिया है कि नहीं और एवरीथिंग लाइक दैट, तो ऐसा कुछ नहीं था, देयर वाजंट इवन एन अबैंडन्ड प्लेस और एक छोटा घर और नथिंग लाइक दैट। एंड अगेन द थर्ड टाइम, लाइक आफ्टर 2 days again I came and my relatives were there with me, like that the other time, and we were going and then I again smelled the same thing, like smell एकदम सेम टू सेम था। तो मैंने पूछा मेरे रिलेटिव्स को कि तुम लोग को ऐसा स्मेल आ रहा है क्या, इज इट am I the only one? And then what it did, so basically they were like my cousins, so it were my cousins and then my chachi and chacha, so my cousins were like कि नहीं तू ही अकेली ऐसा तुझे आ रहा है, and they made food out of me, so we again went and then again this thing happened for the 4th time and I went up to my mom and I'm like कि ऐसा क्यों हो रहा है, and I went up to my chachi and chacha as well, by the end of the day I went up to them and I'm like ऐसा क्यों हो रहा है, and then they are like कि ऐसा मतलब ऐसा बोल मत, अगर कभी तुझे ऐसा मतलब ऐसा स्मेल आ रहा है तो डोंट स्पीक अबाउट द स्मेल इन दैट एरिया, तो बाद में एरिया के बाहर आके बोल कि ऐसा ऐसा बासमती स्मेल आ रहा था, ये हो रहा था, बट वो एरिया में जब तक तू है तब तक मत बोल। एंड आई कुडंट फाइंड द कंक्लूजन कि ऐसा क्यों है, मतलब अभी तक दिस थिंग इज ऑलवेज इन माई हेड एंड व्हेनेवर आई गो ओवर देयर दैट लेन, अभी तो ऐसा स्मेल नहीं आता, बट व्हेनेवर आई गो ओवर दैट लेन इट्स ऑलवेज दिस थिंग इन माइंड कि कभी स्मेल आया तो, कभी मैं गलती से बोली तो, and then my relatives say, even they don't know what's the backstory behind it, but they have heard the people in that area say this thing कि अगर कभी ऐसा स्मेल हो रहा है तो मत बोलो, अगर कभी ऐसा है तो मत बोलो, पीछे मुड़ के मत देखो, ये मत देखो। तो is it something that happens, like is there an aura in particular areas तो ऐसा होता है, only to what person, like it only happened with me? I'll give you an example. If you'll ever go to graveyard रात के समय में, कोई भी मौसम हो, गर्मी का हो, कुछ भी हो, you'll always feel cold. Any time, कोई भी रात को समर के नाइट्स में भी if you'll go there, you'll start to feel cold over there, क्योंकि वहाँ का ऑरा वैसा हो जाता है, राइट? सो इन द सेम वे अब उसकी कुछ तो बैक स्टोरी होगी जिस वजह से बासमती राइस या कि वहाँ पर वैसा वो स्मेल आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं जैसे अभी भोपाल गैस कांड हुआ था, सो स्टिल भोपाल में ऐसा बोला जाता है कि अभी भी वो एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं दे आर स्टिल प्रोन टू दैट, सेम गोज टू हिरोशिमा नागासाकी वैसा। तो इफ दैट स्मेल इज रिलेटेड टू बासमती राइस, तो कुछ तो उसके रिलेटेड इंसिडेंट हुआ होगा, लाइक समवन माइट हैव डाइड और या तो समवन माइट हैव craved to get a piece of rice and then he or she died, so just because of that her spirit और उधर की वैसे या वहाँ की ऑरा वैसी हो, लाइक वो स्पिरिट इतना एग्रेशन में उसकी डेथ हुई रहनी कि लाइक मेरे को नहीं मिला, अब पूरा लाइफ यहाँ पर यही स्मेल आएगा। इट्स लाइक एक बद्दुआ बोलते हैं टर्म, लाइक वो मरने से पहले एक बद्दुआ देखा जाता है इंसान, तो वो भी एक चीज़ हो सकता है, बट स्टिल जब तक बैक स्टोरी नहीं मालूम पड़ेगी तब तक मैं बचपन में कहा जाके लोगों को पूछो कि तुम लोग को पता है बैक स्टोरी कैसा है, आसपास रिलेटिव्स एंड दे हर्ड अबाउट इट, दे नेवर themselves actually spoke to anyone about that area and they used to avoid that lane। मैं ही खुद उधर से जाके और पर देखती थी कि क्या क्यों उसमें आ रहा है जिसमें आ रहा है। बट I wanted to ask you, is there a good ghost and bad ghost? Because there's one incident that happened in my friend's home. So it's like मेरे friend का जो पुराना वाला घर था, they were staying over there for few days, not like for a long period of time, but they were staying there for few days. And उनकी जो there was a cousin with that friend, and उनकी जो cousin है ना, one night what they found is that cousin is playing catch with a random person, and that person is not there. But the cousin, like when they asked the cousin, so the cousin told कि हाँ उधर सामने है, मैं उनके साथ एक बच्चा है मेरी एज का, मैं उनके साथ कैच खेल रही हूँ, and the ball used to actually move. Like my friend actually told me कि ball used to actually move, and फिर obviously her parents started worrying कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ and all. तो it happened for 3-4 nights straight कि वो बच्ची उठती थी रात की and फिर कैच खेलती थी, एक this like there was no one, बस बॉल ऐसा हो रहा था, there was legit no one in front of her, but ऐसा हो रहा था, and then it was like kind of scary for a moment, and then they shifted and फिर इसके बाद कुछ हुआ नहीं। But ना मेरे को ऐसा लगता था कि this is maybe because of a good ghost,
बिकॉज अगर उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं है अभी तक, लाइक उसको कुछ नहीं हुआ, तब भी कुछ नहीं हुआ, इज मे बी दैट द ghost was actually trying to play with her, catch her to something like that. So I feel कि बचपन में 3 दफे को वही दिमाग में था कि no, there's always a bad ghost, it's always bad, it's always scary, it's always evil. But now I think about it, I think that there are good ghosts as well. So what do you think of this? So there's a simple answer to it. According to me, my personal thing is there are no good type of ghost or even bad type of ghost. Ghosts are like, they are just neutral. And no ghost would ever harm you. Until and unless you do something. Yeah, they won't do anything. What will you do? You'll just run away. What else will do? You're like, yeah, either I provide. You won't say like that. You'll run away. So ghosts are always neutral. There are no good or bad ghosts. But whenever we were kid, we were always scared of the ghost, right? Mom used to console us. अरे कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. ये जो good ghost वाला ये जो term है ना, ये कहाँ से निकला है? From the movies like भूतनाथ. भूतनाथ में दिखाया गया है कि is a good ghost. Why? Because kids tend to watch those movies and get manipulated by it or influenced by it. So they used to think हाँ भूत है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं. So जो उनके मन में जो डर है ना ghost के लिए वो कम हो जाता था by watching these kind of movies. So conclusion यही है कि there are no good type of ghosts or bad type of ghosts. And the thing which you are talking about, that could be something else but not the ghost. Okay, that is something else. Yeah, that is something else. जैसे बहुत लोग ये भी बोलते हैं, confuse हो जाते हैं कि they see a giant, they see a skinwalker, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. What about this? Skinwalker वो दिल्ली में that says faceless ghost, जो दिल्ली के बस में yeah. So you can't say that it's a ghost. We are able to say it. Everyone is able to say it. So that's not a ghost. वो कुछ और ही है. That's a different mystery. It can be a different creature. It's and there's a mystery कि कौन है वो creature. Yeah, अलग ही creature है and it's still not figured out कि वो क्या है. But many creatures exist जो अभी तक हमें पता नहीं कि वो क्या कर सकते हैं. So don't get confused by ghost कि वो ghost हो सकता है या कुछ. Okay. So इस तरीके के बहुत सारे giants हो गए, skinwalkers हो गए, फिर बहुत कुछ है जो अभी तक हमें पता भी नहीं है. Okay. I genuinely wish कि ये पूरा दिन चले, but sadly it has come to the conclusion. Do you want to say anything to the audience who are listening to this podcast? Yeah, audience को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमेशा ghost की stories और ये सब entertainment तक रखो. उसके बारे में ज़्यादा curious मत रहो क्योंकि तुम curious रहोगे, it's like a loophole. You'll be curious, you'll start researching about it, but you won't come to any conclusion ever. So ये सब चीज़ को entertainment purpose तक रखो और don't let it affect you in your brain क्योंकि उस चीज़ की वजह से mentally भी तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है. So yeah, बाकी चिल रखो life में and keep listening to horror stories. And yeah, do subscribe to Unfiltered Podcast. And follow his channel as well and his Instagram as well. We'll link it in the description and over here as well, guys. And I hope you had fun. Yeah, I had fun. It was a good experience. Is this your first ever podcast or have you ever been? I actually had ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा but अगर ये हो गया so it will be a nice thing. She knows about it. मैंने अभी तक जितने भी podcast किए हैं ना, by I don't know how, but वो podcast की videos अपने आप delete हो जाते हैं. So अगर ये podcast From YouTube? No. From the person's laptop. Oh, damn. Yeah. How? So अगर ये podcast आ गया so that will be really good. He's like, what this says in the laptop and the phone. और अगर ये podcast आ गया ना so I really think कि मेल एनर्जी कुछ डाउन कर दिया मेरे को क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने 2-3 podcast किए और वो सब लड़के के साथ हुआ है और पता नहीं कैसे लैपटॉप से फाइल डिलीट हो जाती थी. I think the ghost doesn't want me to have a podcast. Yeah, scary. Even this is scary, right? But I hope this actually podcast goes up. Yeah, because it you was 5 to 6 copies of this. Yeah, then we'll do that right away. But thank you so much. It was a great time. Thank you. Thank you.